Okay, so for those who do not know me, my name is Ansari and I am a Forex, US stocks as well as a crypto trader since 8.5 years. Okay, let's just start with the gold. जिन जिन लोगों के अकाउंट जो है वो गोल्ड को सेल करने की वजह से विदाउट एनी स्टॉप लॉस वॉश हुए हैं, तो यार देखो अकाउंट वॉश होना इज शुड नॉट बी अ बिग डील. फेलियर्स नहीं हो, फेलियर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस. ये स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे जो है वो फेल होना बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है. इन रियल प्रैक्टिकल लाइफ जब तक फेल नहीं होगे तब तक नहीं सीखोगे, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते. पॉइंट ब्लैंक पीरियड. तो डिसहार्ट होने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, जस्ट लर्न फ्रॉम द फेलियर्स एंड मूव ऑन. आगे बढ़ो, बेहतर ट्रेडिंग करने की कोशिश करो. Now let's just move on to the topic of this video presentation. Are you a professional forex or crypto trader, or you are an amateur trader? Let's just find it out. Pointer number 1 is you predict, you make your own opinions और उन opinions पे rigid हो जाते हैं. जैसे कि गोल्ड सेल कहीं तुमने किसी बड़ी सोर्स पे देख लिया, 2-3 जगह देख लिया, and you just sold gold without any stop loss. इसके बाद तुम्हारा अकाउंट जो है वो वॉश हो गया. ट्रेडिंग should not be predictive, rather it should be reactive. जोन में मार्केट जब आए उसके बाद कोई कैंडल बने जो कीमतों के उठने का क्लू दे या कीमतों के गिरने का क्लू दे, रिएक्ट ऑन. Registration to work one-on-one with me is now up for the grab. So if you wish to contact me, my Instagram as well as Facebook link is in the description. Contact me if you think I can help you to upgrade your life financially. Contact me so that I can see even if you're a good fit for my programs or not. Contact me if you think that I can help you in any way, shape or form. Crypto Mastery program is available for $100 and Trading Mastery program is available for $150. Pointer number 2 is poor risk management. You risk all of your account on one trade. एक ही ट्रेड में अपना सारे का सारा जो कैपिटल है you risk. My risk management strategy is I do not, or I should say I risk 1% और 2% पर ट्रेड. अब वो A प्लस ट्रेड भी हो तब भी I prefer to trade 2%, not more than that. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लगातार ट्रेड्स लगातार हारता हूँ तब जाके मेरा अकाउंट जो है वो वॉश होता है. The last pointer is unrealistic dreams. $100 से $1000 बनाना, उन $1000 को 10,000 में कन्वर्ट करना और उन $10,000 से सिविक खरीदनी है, आईफोन का लेटेस्ट वर्जन खरीदना है, में प्लॉट खरीदना है. अनरियलिस्टिक गोल्स और अनरियलिस्टिक ड्रीम्स की वजह से भी यू आर स्टिल एन immature trader or an immature. Hit like, share and subscribe if you wish. I'll see you in the next one.